that. तो उसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराती हैं, वाईएसआई को या खुद को? तो किस मीन्स अच्छा है या बुरा है, किस सेंस में? जिस सेंस में आप बताना चाहें, जो कहेंगे हम आपकी बात मान लेंगे। हम क्यों No, अपने को sir, अच्छा it's या really खराब great. कहें? Means to be part of ISI, it is really great. I'm feeling so happy. Means it's good. ओके, चलो ठीक है। यस मान्या, Yes, sir. इसी का ऑब्जेक्टिव था आपका वाईएसआई ज्वाइन करने का, तो उसमें कहाँ तक सफलता मिल पाई है? हाउ मच परसेंटेज और हाउ मच सक्सेस यू हैव गॉट? Sir, according to me, I joined YSI because हाँ बोलिए। sorry, sir, it got muted. Sir, I joined YSI to improve my communication skills and to improve my like confidence and personality. So I think I have succeeded in that a lot. Earlier, I could not feel confident of myself, and that's why I did not participate in like events. But now I am getting offers to participate from the teachers itself, and Oh I'm my so God. much busy with that I sometimes say that, ma'am, please take new students this time. I'm busy this time. So like, sir, it is a Wow. very great this thing experience. And so I can myself experience my confidence level, because I am so much confident now that even if I am given any topic on spot, I will not go blank. At least I can speak for 1 minute or 2 minutes. Like if in any competition, there's a time limit general of 1 to 2 minutes, so I can speak on that. Whether it will be extempore, so I can speak on that. It's not like I am like earlier I did not have any idea of how to speak on topics that are given on the spot, but now I'm so confident that I can speak like on any topic if I am asked to in front of other people. So my confidence has very much increased, and my communication skills, like how to frame the sentences and how to converse, how to express myself in front of others, so that they can understand my things clearly, so that is also increased. And uh, and sir, my personality, I don't know, like people who see me, they will be able to tell, but sir, I feel that confidence in myself that I could not feel before joining YSL. Okay. Yeah, Bhavya, Yes, sir. what was your objective to join YSI and how much success you have got? Sir, my basic objective was to see whether I'm able to speak in front of people or not. And it was kind of a fright that I didn't able to speak. So now it's very much now it has very much improved, and I can see, as Mana said, it's a feeling that better by yourself. So I can feel that I have gained so much confidence that I can speak, and in English also, like able to express myself in English. So yeah, and personality is it was okay before also, but it has improved. Good. Yes, Lubna, after joining second term, what was your objective and how much you have achieved? Sir, the objective of my rejoining of YSI is that I have to needed some practice. So by this rejoining, I am practicing, and the presentation skills, in which before that I was speaking, but I have speaking in a stopping, but now there is some fluency to speak, and I am feeling better to explain anything, because before that I was speaking, but the I think the front of the other means other people are not understanding me in a easy way, but now I am speaking. And in the when I was the part of the battery, so there I was learned many things, so that things which I have learned there I am implementing. And sir, before that I was very hesitating to ask the question in the class,
So now I am in the class, I have no hesitation to ask the question. Before that, it was happening that we should ask or not, but today, nowadays, it was happening that I have no hesitation to ask the question. And sir, in the last batch, when I was in batch 3, so you you learned about the memory power. So nowadays, which the things which I am studying, so now I'm focusing on to revise. So by the revise those things which is very beneficial for me. So that things which we are learned in the batch 3, those things I am implementing in a very easy way, and I am feeling very good, and it give me more and more happiness, sir. Okay, Thank you, sir. great. Congratulations, Manya. Finally, you got that background. And Mansi Yes, is sir. I already was having. trying hard to get this. Okay, okay, great. So Murari, how are you feeling? How is your journey going on? अभी तक कैसा लग रहा है आपको YSI में आकर के? क्या महसूस हो रहा है? अच्छा, खराब? क्या सोच के आए थे? क्या मिल रहा है? I joined the ISF because it remove hesitation problem and I able to confidence level high and communication skills also high improvement and some development also day by day increasing order. So I Okay, am happy for. okay, no problem. Yes, कविता, क्या Yes, sir. एक्सपेक्टेशन था आपका YSI से और क्या अभी तक मिला है आपको? Sir, I feel very confident. At first side when I heard about the YSI, and they told me that in YSI class they will teach us how to behave and how to how to make yourself attractive whenever you are talking and communicate with someone, and I wouldn't regret joining the YSI. And I'm glad that I take the decision for joining a YSI, and also I learned at some place where I felt that I'm not able to communicate with the strangers. I also communicate. Now I can communicate with them very frankly, and before I was hesitating about asking about any topic in my class, but now I can now I will ask without hesitation, and if at any point I was not correct at any point, I just told myself that it was just mistake, and I'm at learning stage, and it's okay to make a mistake. And also you also saw that at some session I was not able to speak, and I also point out my mistake at last, and I just learning a lot of things. I just learned a lot. Good, good. Lot many changes are there, right? Good. Now you are very confident and your communication is also very fluent. Yes, Bhavya, are you there? Yes, आप बोल sir. अच्छा बोल चुके हो? Yes, sir. Okay. Good. So Sir, I would everybody. like to add one more point. We learned presentation skills last time. So today we had in our political science class, we had a presentation on Right to Education Act 2009. So everyone was reading from the slide, but I wrote only the headings and I was explaining it. So ma'am appreciated me for that. And sir, here in YSI we have made friends also. Like Bhavya is a very Bhavya especially, and Kavita is already a friend because she is there in school also, college also, and Mansi is also a good friend of mine. So we are friends now. Yes, It's very I was also thinking of putting this point that yes. I have made Yes, sir. We She has also get a stolen. new friend. But she has stolen from you, huh? I forgot. So, sir, one point I want to add that before this session, I never debate in anything, but in this session in YSI, I also debate. Sir, I also took part in I'm going to take part in a painting competition on Women's Day. It is going to held in our Very college. good, very good, very good. So actually you are
breaking your own boundaries which you have created since so many years. Yes, sir. And you made yourself typecast for so many years, like you put captive yourself that I am this way only and I can do this much only. Now you are free, you are freeing your inner body. आपके अंदर भी एक और मानसी, एक और मान्या, एक और कविता, एक और मुरारी, एक और लुमना, एक और भाव्या है, जिसको आप सालों से दबाते रहे, अरे चुप रहो, तुमसे नहीं होगा, शांत रहो, चुप रहो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चुप रहो, ये ट्राई मत करो, पता नहीं फेल हो जाओगे, चुप रहो, ये नहीं हो पाएगा तुमसे, मत बोलो नहीं तो गलत हो जाएगा। तो उस लुबना को या उस मानसी को आपने कितना दुखी किया है, कितना प्रताड़ित किया है। अगर उसको बस चले तो आपको सीधे फांसी पे लटका दे। नहीं नहीं मत करो, ये नहीं होगा, मत करो, ये नहीं होगा मुरारी तुमसे। अरे हद है यार, करने तो दो उसको। जो तुम्हारे इनर का एक मुरारी है, तुम्हारे इनर का एक लुबना है, तुम्हारे इनर का एक मान्या है, उसको तो इतना तुम लोगों ने दुखी किया है, ये नहीं हो सकता तुमसे, वो नहीं हो सकता, ये ट्राई मत करो, वो मत खाओ, ये मत करो, ये मत, ऐसे मत करो। इतना तो घर वाले भी नहीं करते होंगे किसी के, जितना तुमने अपने आप से किया है। अब समझ में आ रहा है कितना तुम लोगों ने अत्याचार किया है? यस सर, बहुत ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. सजा तो सीधा फांसी होनी चाहिए। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। तो दोनों चाहे वो मान्या इनर हो चाहे मान्या आउटर हो, दोनों को मिला दो। Sir, I literally the thing you are saying, I literally have done as like Manya also knows कि I am very free spirit and that kind of girl. But Spirit हो तो sometimes पहले क्यों नहीं बताया? sir, I mean happy go lucky. तुम्हारा पिक्चर नहीं दिख रहा है क्या? Happy go lucky type of girl, but sometimes I keep telling myself, okay, be serious, be serious, be serious. Like it's not even needed. Also, then also, I keep telling. You should feel both the side, both the party, both the inner and outer Mansi should feel the same. That is the power. आपस में झगड़ा करते रहोगे तो फिर दूसरे फायदा उठाएंगे, भाई जो काम करना है वो नहीं हो पाएगा। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट को जीरो कर लो, जैसे जीरो कार्बन इमिशन नाम चाहिए ना ओजोन परत को बचाने के लिए। तो अपने आप को बचाने के लिए पहले अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को जीरो करो। एक डिसीजन लेना सीखो लाइफ में, गलत है तो भी मेरा है, सही है तो भी मेरा है। ओनरशिप लो। कभी ये बुरा मत बोलो कि अरे क्या कर दिया, क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया। जो कर दिया सो कर दिया, अब ठीक कैसे करेंगे ये बताओ। कर दिया तो सो कर दिया, वो जो होना था हो चुका, भाई क्या ही करे। तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपने आप को तो मत रखो। अपने आप को पिछले 10, 12, 15 साल से बहुत सता रहे हो, ये नहीं हो सकता तुमसे, ये इसके लायक नहीं है हम, ये मेरे पास नहीं है, वो नहीं है। कितना निगेटिव 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 करते करते अंदर कितना निगेटिविटी भर दिया है आपने, कभी अंदाजा लगाया है? इतना तो बेचारी कभी जाएगी कोई सास बहू को नहीं तड़ पाती होगी, हैं? सेकंड रुको जरा सा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हर आदमी पहले अपने आप को बचाओ अपने आप से। कोई दूसरा आपको कुछ नहीं कह रहा है, आप खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा कर्ज करते हो। पता नहीं किसी ने कहा या नहीं कहा, आप अपने आप को बुरा फील कर लेते हो, विच इज मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स। तो उससे बाहर निकलो, और जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतनी जल्दी अपना भला करोगे, दूसरे का भी भला कर दोगे, क्योंकि आपकी निगेटिविटी कम फैलेगी, कम कार्बन उत्सर्जन होगा। तो अंडरस्टैंड करो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार पीपल आर मेकिंग देमसेल्फ टाइप कास्ट। जैसे आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल, फ्यू पीपल डोंट हैव एनी फेशियल एक्सप्रेशन। वो कुछ भी बोलेंगे उनका फेस एक्सप्रेशन आता ही नहीं है,
मतलब आपका उनसे बात करने का मन नहीं करेगा, और आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो, अभी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। उससे पहले के वीडियोस देखना, अपने पहले दूसरे काल के, जब आपने पहला दूसरा भाषण दिया होगा, जैसे लगता था कि चेहरे पे पता नहीं कितनी उदासी छाई हुई है, अगर हंस दिया तो पता नहीं कोई गुनाह कर देंगे आप, या एक्सप्रेस करके बोल दिया तो गुनाह कर देंगे। टोन बहुत स्टैटिक, अभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो आई वाज जस्ट वाचिंग एलन मस्क इंटरव्यू। एलन मस्क का नाम पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. He is the person whom I follow. He is the only entrepreneur whom I like, the way he lives life. So I was just watching ki how, what is his interview way of interview. So he was telling ki whenever any employee comes to his company, he don't see degrees. He asks one thing ki, have you done anything difficult in your life? तो बोलता है, अगर मान लो एम्प्लॉय होता है ना, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो बोलता है हाँ हाँ किया है हमने, ठीक है। तो ही आस्क्ड सेकंड क्वेश्चन कि टेल मी द एंटायर प्रोसेस and how you have handled that process. So those person who have already done it, they will explain you bit and pieces, every detail. Those who have not done, they will take the outer layer. And if such kind of persons are there, he discard immediately. Second thing what we usually see in the employees, that you should have a zero attitude, जो कि मैं आपको YSI में कहता रहता हूं कि I have only two expectations: zero attitude and high passion. So today I was watching Elon Musk video and I saw this similarity, and this I am practicing since so long, but today only I came to know that he also believe in this same theory कि whosoever is coming, या in our YSI also, किसी से भी आप मिल लो, उसका एटीट्यूड नहीं मिलेगा आपको, वो सपोर्टिव मिलेगा आपको। तो जीरो एटीट्यूड एंड हाई पैशन, he also believe in the same theory. Why he is saying? He explained that if any person, he is a talented also, but his behavior is not good with the other person, so he will create more damage than the benefit to the company, because there is no single work na, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। And in YSI since beginning, I never see biodata of the people. I only see that these two things. If you have attitude, you are not good for me, at least good for others, but not good for me or my organization. And second, if you are not passionate to do anything, you are good for nothing for me. What I will do with your talent, what I will do with your degree, that passion should come from here. If you have a passion, you can achieve anything. Why I am telling you guys, see, today I wanted to talk about the interview, which will be your next target. जहां आपको जाना है, that is your next destination, जो आपको मिलेगा अब आगे के रास्ते में। दक्षिण दिशा की तरफ जब आप बढ़ोगे, कुछ दूरी पे एक बरगद का पेड़ दिखाई देगा, और उसके नीचे से जो है कि एक बगल का रास्ता गया होगा, वहां से दरवाजा खुलेगा और वहां पे लिखा होगा इंटरव्यू बोर्ड, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो चाहे प्राइवेट नौकरी का हो। तो अब उसकी तैयारी शुरू कर दो। आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में वो सामने आपको दिखेगा ही दिखेगा, उससे तो बच के जा ही नहीं सकते हो आप। एंड इफ यू आर नॉट थिंकिंग और प्रिपेयरिंग राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 5 years, यू आर बाउंड टू फेल। परीक्षा की तैयारी अगर 1 साल पहले नहीं करोगे, 1 दिन पहले पढ़ के दोगे, तो क्या होगा? मार्क्स अच्छे आते हैं, नहीं आते हैं? तो लाइफ का भी तो वही परीक्षा है। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल पहले इंटरव्यू की तैयारी नहीं करोगे, तो परीक्षा में फेल हो जाओगे इन रिजल्ट पे। उसकी तैयारी अब करने का समय आ गया है। तो नाउ आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू, ये होता क्यों है? मुरारी जी, ये इंटरव्यू क्यों लेते हैं लोग? नौकरी सिफारिश पे क्यों नहीं दे देते जैसा पहले होता था? व्हाई लॉट्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस इज देयर? टेल मी सर। Because company wants to knowledge and discipline of the employer या subordinates या manager, any
to join company. But Okay. to the join company, a person say knowledge and skill set development. What do you think about आपका माइक म्यूट है. या these बोलिए are बोलिए सर. हाँ. because these are the major important things for joining the company in company any company. Interview is necessary for the company to join for it. Okay, could have elaborated मुरारी जी. ये आपके पास चांस था, तो ऐसे ही चांस आप और खोते रहेंगे अगर आप मौके को ग्रैब नहीं करेंगे. It always grab the opportunity. Yeah, Lubna, why interview is there? Sir, interview to tested the personality of the person is taking the interview. What is the need to test the personality? Actually, sir, the many person has the many knowledge of in which they are studying in that field, but they have no the manner of to speaking and the communication and the behavior, how to behave and how to tackle the people. So to tested this types of things, interview is necessary. पीपुल बार बार हम लोग के जुबान पे एक्चुअली चढ़ा रहता है क्योंकि हम लोग का लोकल लैंग्वेज पीपुल है, तो उसकी जगह पीपल का पेड़ याद रखिए. पीपुल की जगह पीपल बोलिए, बस Okay, sir. काम हो जाएगा आपका. पहले मुझे भी नहीं आता था प्रिंसिपल की, मुझे मतलब वो स्पेलिंग नहीं याद आती थी. तो एक दिन मैंने बहुत देखा प्रिंसिपल दोनों को लिख करके, तो उसमें एक चीज लिखा हुआ था कि बचपन में एक स्कूल होता था तो उसके प्रिंसिपल जी का जो पेट था थोड़ा मतलब बैठे बैठे फूल जाता है, निकला रहता है जनरली. तो फिर मैंने देखा कि पी जो है थोड़ा सा निकला हुआ है और ए भी निकला हुआ है, मतलब वो कोरिलेशन हमने क्रिएट किया कि पेट फूला हो तो पी ए एल वाला प्रिंसिपल होगा और पी एल ई होगा तो इसका मतलब वो सिद्धांत होगा. तब से आज तक मैं कभी प्रिंसिपल, वो लिखना होता था ना टू दी प्रिंसिपल स्कूल में, Yes. चिट्ठी लिखनी होती थी कि आज छुट्टी कर दिया हमने, ये किया वो किया, ऐसा करके. समझ गया? Yes, sir. तो इस तरीके से हमने याद किया. तो हमेशा कोरिलेशन में लेके जाओ, चीजों को कनेक्ट करो. पीपुल तो पीपल बोल दो, पीपल का पेड़, Yes. काम खत्म. कई लोग थॉट बोल देते हैं, थॉट, THOUGHT, थॉट, थॉट को थाउट Thought. हो जाता है मिस्टेक. लोकल में बोलते बोलते थाउट 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 एंड थॉट थॉट. तो एनीवे, चलो किससे मैं पूछ रहा था? मानसी. हाँ मानसी बोलो. इंटरव्यू, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू? गवर्नमेंट इंटरव्यू के बारे में बात करना तुम. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी प्राइवेट इंटरव्यू. Okay, sir. So the interview, they are means they are not asking for the bookish knowledge, because for bookish knowledge they have taken the earlier exams of means pre or mains. In that they check the bookish knowledge, but in interview they ask for what our personality is, means what kind of personality we have, what kind of गवर्नमेंट जॉब में behavior पर्सनालिटी क्यों चेक करते हैं मानसी? गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं कुछ ज्यादा ही टेस्टिंग करते हैं वो. IAS वाईएएस में, PCS में तो बहुत ज्यादा करते हैं. ठीक है, एक सेकंड मुझे देना है, एक फोन आ रहा है, बस एक सेकंड मुझे दे दो बस. हेलो.
Sorry, Mansi. Chalo. Yes, sir. So you're saying they check more about personality. Means personality means they check the what kind of behavior we are having towards the people. Means like if we are at a higher position, then what kind of behavior we are feeling for the people who are means who are coming for help to us. And they also, if they talk for means if they are taking interview, I'm they can expecting check some our good answer. mindset. I'm expecting some good quality answer. So be aware about this and give your answer up to that quality. Don't give me a simple answer. Okay, sir, I will try. Sir, so they are checking our mindset about the people, and they also check in the difficult situation how we will behave. If there is a means some situation, difficult situation, then what kind of behavior if we are having. If we are hyper, then we cannot manage or we cannot relate in that situation. So they are checking for this quality. I think so. Okay. And why interviews are being conducted in such a huge manner, like 1,000 people are coming with the dress code, with the certificate and all those things. But generally interviews happen, within first 30 seconds, either you are in or either you are out. How much you are convinced with this idea? So that they are selected means first in 30 seconds. Yes, sir. It may be possible. Means in what way we are starting our communication, in what way we are interacting, and they take it at a very huge way. Means you are saying that they are so maybe they are checking up the confidence that how we are reacting to see the means large number of people, what kind of confidence we have, how we will deal with the situation when there are means high people and we have to give any presentation or we have to speak in front of anybody, or means we have to ask for any problem, means ask for any help to the higher authorities. Means they check us for every situation, in every situation how we will react, how we can relate in that situation. Okay, no problem. Yeah. Yes, Kavita, what do you mean by an interview? Why it is so precious? And do you feel that you have to prepare yourself for the interview more for next coming 2 to 3 years? Yes, of course. Sir, interview is a meeting between two people, like two or more people, and for getting the suitable information, our personal information, and and interviews are conducted in various fields, like for admission, for getting the job, and for the higher positions, and but for the company, any company like private or government, it's a very initial part for the organization, because as they are hiring the person for the suitable, hiring the right person for the suitable place. If by any chance they had the wrong person for the right place, then it wouldn't work. It will be the loss for the organization if they didn't do their work properly. And company also obtain the information about the behavior of the interviewer. And so they can they ask the question about their personal details, and also the interviewer make comfortable interview, so that he cannot get nervous. And in the interview they select the employees for the person, and also um, and in the interview which I taught in the interview, that first 1 minute is about checking our body language. Everyone said that interview is all about asking question answer, but no, not only the question answers. In interview they also check our body language, our personality, and our movement of our body, like we are moving our hands or not, or
some people are lifting their pair. I mean, they were just moving their legs so very after some times they're just moving their legs or not, and these all behaviors shows that the person is suitable for the position or not. And also I was taught by my teacher that our first our if we it's also about the getting it's also about looking good. I mean, the way of our we have to look formal in for the job or for any kind of position that we are going to give the interview. And if we are wearing like if we are going for the HR manager position, going to give the interview for the HR manager position, so we have to get dressed up like formal, so that interview get to know that we are formal for about our job. And that's all. At least you tried well. Yeah, Manya, why interview? Do you Yes, sir. feel that this is the right time to invest your thinking or direction towards preparing yourself for next coming 2 to Yes, 3 sir. years interview? Yes, sir. Yeah. Because according to me, when we will not be prepared, then if we will not know the important elements of an interview, then how will we face it? Sir, I will be mentioning both government and private jobs interview. Like if we talk about government jobs, then you are going after getting your government job. Like before getting your government job, you actually pass through an interview, and that interview is to check that you after if you get the government job, then you will go to the system, you will go into the system of the country, which is responsible for the for managing the people of the country and their interests, like whatever it is, like of different departments. So if we like going in an interview of a government job, then it is there to check that you are going to system, are you the right person to go into the system. Like if you they first check your mentality. Like if you are going in a system of having a very communal mentality, having a very backward mentality, so you are not suitable for that. And so we are often told to dress in formals in any of in the interview, whether it is private or government. So it is to check whether like if we have meetings in the future in the company, or whether in the government sector we have meetings, are we able to carry ourselves in a better way in a formal interview. Like what is our speaking styles, what is our body language, what is our way of expression, are we able to express ourselves nicely in front of the people. And after getting a government job, you actually are going to be a public servant. If you don't have the manner of talking to people, if you don't know how to talk to people, then you can't be a public servant. You have to have those qualities. You cannot be arrogant with people, and then you are saying that we are working for the country. You are working for the country, for its people, and you cannot have be so arrogant. Now if I talk about private jobs, when we go to the corporate sector, so we need to have tech skills. First of all, we should know Excel, MS Word. That is another thing. If we talk about the interview part, then we have many presentations in private sectors. We have meetings, client meetings, business meetings. So in that we have to have those that confidence to present ourselves in front of other people, and to convince people with an idea, so that they join our company, so that they accept our proposal for a job, for a business idea, business plan.
and we need to have that convincing ability. Like we are often asked about situation, so we are given a situation in interviews and we are asked about like how will you handle it. It is to check that whether if you really get into the situation, then are you going to tackle it in the right way. And if we talk about our this thing, we in like formal dress code, then again I will say that this your way of carrying yourself in whatever dress you are wearing, and your body language matters a lot, because whether you are in government sector or you are in private sector, you cannot have a very this thing very loose body language, very loose self confidence. You cannot have that, and you cannot go into any job without having a bold personality, without having a smart personality, because it is at the end you have to handle your responsibility which has been given to you, and you have to be an asset to the country if you are going for the government job, and an asset to the company if you are going for private job. So that was it. Good. You tried well, but should be like that. This is the point which I would like to Yes, bring sir. your attention. Now I would Yes. like to get into this part. So you are not trying to bifurcate my mind. So if you are not trying, then why I should focus upon your whatever you are saying? Content Yes. does not matter. Content matter only 7%. 55% of the time, the way you are saying, your body language, the kind of tone and pitch you are bringing. 93% मार्क्स आपको इसी पे मिल जाते हैं, इसीलिए लोग 30 सेकंड के अंदर या तो इन होते हैं या तो आउट होते हैं। शकल देख के समझ में आ जाता है कि इनको रखना है कि नहीं रखना है। खत्म कहानी, नो इंटरव्यू। आप अपना झोला पत्थर जो लेके आए हैं लेके जाइए एज इट इज। दिल रखने के लिए खोल के दिखा दीजिए फाइल में क्या क्या। ये देखिए सर मेरा इंटरमीडिएट में 96% मार्क था। ये देखिए सर मेरा बीए में 75% मार्क्स था, सबका 73 आया था, मेरा ही केवल 75 था सर। क्या करेंगे उसका? तो अंडरस्टैंड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है छोटी चीजों में, एंड हमें क्लैरिटी कोई नहीं दे रहा है कि करना क्या है। सिचुएशन थोड़ी टफ होती है। या भाव्या, what do you mean by interview? An interview, what do you mean by an interview? Sir, an interview, it is a process to discover, like the interviewer try to read the mind of the interviewee. He tries to bring out all the things that the interviewee has in their minds, and interview also checks upon the passion they have for the job, the curiosity they have for the job, and in this point I would like to give an example. There's an uncle, my father's friend. His son cleared NDA exam, and he went through all the processes of that. After clearing that NDA exams, he went through all the processes, but he got eliminated in the last round, that interview round, just because he was preparing for the IIT first, and he very easily gave that exam, NDA wala. So in that round, the interviewer asked him that what are you doing now? Like, what is your goal? What is not goal, not about goal, but what are you doing now? And instantly he said that he is preparing for IITN. And that moment he eliminated it, and he cleared all the stage, like group discussion, and I don't know about the stage, but he cleared all that. So it's so I think from this that they see the curiosity, the passion they have. The body language and confidence is so mandatory, but they also sees the way, the outlook of the person
on the situations, like the thoughtfulness of about the topic. If someone is if the interview is given, if the employee is given something or some situations, then how they deal with that, how they can deal with that. And thoughtfulness, curiosity, passion, and also they say see their empathetic behavior also, that whether they are able to understand their point of view, and keeping their point of view, but expressing their opinion, like different opinion, not copying that. So they also sees this kind of skills, and so basic skills are important. They see that also, body language, confidence. And sir, this much only. Thank you. Okay. So now from my point of view, I will request you guys that you should start focusing more on your interview skills, because that is the only place where you will either get selected or get rejected. वो आखिरी place है. उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, that part you have to thoroughly research in you yourself. Research that what is your CV, what kind of CV you have, whether your CV is saying the same thing what your personality is saying, or the way you are expressing CV and everything is matching or not. Second thing, yeah. I would like to ask something, sir. I am a dropper. I was preparing for NEET. So if I would face an interview, and if they ask that why have you taken drop, then why are you drop? If you are preparing for NEET, but why have you come here, sir? So how would I answer this type of question? First thing कि get out of this thought कि अगर आप drop कर लिए हो तो कोई गुनाह कर लिए हो. जो इंटरव्यू में बैठा है वो भी ड्रॉप आउट ही होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है. तो सबने सेम ही गुनाह किए होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरे ड्रॉप आउट होना कोई गुनाह थोड़ी है भाई. You have taken that risk. Yes, sir. See, there are two ways to grow our career, because since this job is not definite, neither we are knowing that where we are going to land in which job. So knowing the fact that whether if I will take the drop, I can pass that NEET exam. So it was a risk which I have taken based on my caliber. But due to some margins, I was not able to make out. It was as good as like experiencing or getting motivation to do something else. So now I am very clear that NEET was not for me. So what next? Certainly, sir, your company. More than your company, the kind of job which I can create, which I can contribute, so that I can add value to your company. I'm not here for the job. I'm here for the contributing something based on my experience, based on my knowledge, based on my ability. If you feel that I am a suitable person for your company, then only offer, then neither don't waste your time and my time. Clear? Yes, sir. मैरिज करके डाइवोर्स नहीं लेना है 6 महीने बाद. ये कौन सा तरीका है भाई? If I know that the divorce is going to happen because I'm not suitable for that, then why I should go and spend all my time and everything? तो मैरिज और जॉब में बहुत सिमिलैरिटी है. मैरिज में क्या होता है, आप सुटेबिलिटी ढूंढते हो एक दूसरे की, ब्राइड एंड ग्रूम्स की सुटेबल है कि नहीं है. अब ब्राइड एंड ग्रूम की सुटेबिलिटी ढूंढने के बाद उनकी फैमिली की सुटेबिलिटी ढूंढते हो, है ना. फिर उसके बाद सोसाइटी की सुटेबिलिटी ढूंढते हो. तो जॉब में क्या होता है, जॉब पर्टिकुलर जॉब डिपार्टमेंट की सुटेबिलिटी ढूंढते हो. फिर कल्चर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी सुटेबिलिटी ढूंढते हो. फिर फ्यूचर में आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप ग्रो कर पाओगे कि नहीं, टीम बना पाओगे कि नहीं, उसकी सुटेबिलिटी ढूंढते हो. उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है. तो कुछ कॉन्सेप्ट हमें बताया ही नहीं जाता कभी. सोचते हैं सब बात करना गुनाह है. कोई बात करता है कभी आपसे इंटरव्यू की या इस तरह की कि करना क्या है आगे लाइफ में? सब बोलते पढ़ो 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 पढ़ो. एक ही चीज सबको पता है, पढ़ो 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 पढ़ो, नंबर ले आओ नंबर ले आओ. आ गया नंबर, 10th में 90% आ गया, 12th में 96% आ गया.
अब वो सर्टिफिकेट भी आपने साल से 2-3 साल से नहीं देखा होगा, कहाँ रखा है, खोजना पड़ेगा। पता नहीं उस फाइल में था कि वो पीली वाली फाइल थी कि नीली वाली फाइल थी, देखो कहीं पे रखा होगा। क्या करना है, उसकी फोटोकॉपी लगानी है एग्जाम पेपर में, उसका इतना ही इस्तेमाल है। कौन कौन सा सब्जेक्ट था उसमें, कौन कौन से चैप्टर तो छोड़ ही दो, जिंदगी में कभी नहीं याद आ सकते। कितने चैप्टर थे, चैप्टर का केवल नाम बता दो जो इतने दिल से पढ़ा होगा, वो भी नहीं याद आएगा। आज फार्मूला पूछ दो, फिजिक्स इतना शिद्दत से पढ़ा होगा या केमिस्ट्री इतना शिद्दत से पढ़ा, एक फार्मूला पूछ दो सब गायब। आइडिया ये नहीं था, कि आइडिया ये था कि आपको समझना था, आइडिया ये था कि आपको डेवलप करना था अपना माइंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। इसलिए माता पिता ने कहा कि यार साइंस पढ़ेंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, या आर्ट्स पढ़ेंगे तो उनका कैलिबर बढ़ेगा। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। कई बार ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि बहुत मतलब अलग ही बोलते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो है क्या। एक बार मैं नेस्ले में था, तो बैठा हुआ था, तो इंटरव्यू चल रहा था, तो एक बंदा जो है देर से आया, 1 घंटा देर से आया, मतलब जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था। तो मैं भी नया नया रिक्रूट हुआ था, मुश्किल से 1 महीना पहले मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी, या 2 महीने पहले। तो जो इंटरव्यू ले रहा था, तो ही आस्क्ड मी कि नीरज क्या करना चाहिए इसका। एक मैं अंदर ही उसके साथ ही बैठा हुआ था, एंड मेरा कुछ ट्रेनिंग चल रहा था। तो ही आस्क्ड मी कि बॉस आस्क्ड मी कि क्या करें इसका, ये तो 1 घंटे लेट आया है, और मुझे पक्का पता है झूठ बोल रहा होगा कि बस नहीं मिली। दिल्ली की बात बता रहा हूँ, आई वाज इन दिल्ली। तो क्या करें। तो मैंने कहा सर 2 प्रश्न, मतलब दो उत्तर है। एक, पहला कि हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, इसके आधार पे आप उससे वापस भेज सकते हो, वो बहुत आसान काम है। दूसरा कि जरूरत किसकी है, जरूरत कंपनी की है कि एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। हो सकता है कि वो वाकई देर से आया हो, और आपके एक प्रीजुडिस से एक अच्छा कैंडिडेट इंटरव्यू देने से बच गया, या इंटरव्यू नहीं दे पाया। हो सकता है कि वो अच्छा कैंडिडेट किसी टेरिटरी में जाके अच्छा कर दे और बिजनेस को बढ़ा दे, तो वो भी एक चांस चला गया हमारा। तो आपका रिस्क कितना बड़ा है, आपका रिस्क इतना ही है ना कि उससे बुला करके एक इंटरव्यू तो ले लो। बाद में तो दोनों डिसीजन आपके ही हाथ में है कि रखना है या नहीं रखना है, और मतलब वापस भेजने के बाद भी नहीं रखना है, और यहाँ पे लेने के बाद भी आप नहीं रख सकते हो। तो अगर वो वहां से यहाँ तक आया है उसके बाद भी, तो कहीं ना कहीं वो अपना कमिटमेंट शो कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको भी अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, इंटरव्यू तो ले लेना चाहिए। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि आई एम रियली हैप्पी टू सी द आंसर। वरना दूसरा कोई होता तो यही बोलता कि भगा दो सर, देर से आया है तो भाई रूल है, तो देर से आया तो भगा दो, सीधी सी बात है। तो यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर अदर पार्ट्स एज वेल। जो नहीं दिखता है उसको देखने के लिए करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, और विजन चाहिए। तो वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। दुनिया इतनी आसान नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। लाइफ इज फुल विद द कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारी चीजें आपके लिए इंतजार कर रही होंगी रास्ते में आपके, वो अभी से पता चल जाए तो शायद स्केयर्ड हो जाओ, उस रास्ते जाना ही नहीं चाहोगे। बट बी रेडी, देयर इज नो अदर वे। उस रास्ते तो जाना ही पड़ेगा, सबको जाना पड़ता है। किसी एक आदमी का स्मूथ लाइफ बता दो, रोलर कोस्टर लाइफ है। तो बट पीपल आर मैनेजिंग। तो उसी तरह से आपको भी वो कैपेबिलिटी अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू में आपको ये विश्वास दिलाना होता है कि आई एम द सुटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब। तो वो विश्वास दिलाने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से क्लैरिटी रखनी पड़ेगी आपको। एंड नोबडी प्रिपेयर्स फॉर इंटरव्यू। सब प्रिपेयर करते हैं किसके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग देते हैं एग्जाम, लाखों लोग पास होते हैं, और सीट कितनी है, 500 सीट है, 1000 सीट है। तो डिफरेंशिएशन कहाँ आया, फाइनल इंटरव्यू के समय आया
ठीक है, तो अभी आज इंटरव्यू पे सोचिए और अपना सीवी बना करके जो भी है बना के रखिए। हम कल शायद अगली बार सीवी पे बात करेंगे कि सीवी बनाते कैसे हैं, ठीक है, या बाकी लोग कैसे बनाते हैं, क्या पता शायद एक आध तो अच्छी चीज निकल जाए। और आप जब सीवी बनाओगे तो एक डेटा सामने आएगा, आप देखोगे कि आपकी पूरी सीवी बिल्कुल प्लेन दिख रही है, 10th के मार्क्स होंगे, 12th के मार्क्स होंगे और ग्रेजुएशन के मार्क्स, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। मेरा No, sir, not at all. No, sir. बुरी नहीं लगी सर। कि मेरा इंटेंशन बस इतना है कि आप दुनिया के लिए बहुत तैयार होके जाओ, कमांडो बन के जाओ। क्योंकि वाईएसआई का अभी तक ट्रेंड है कि कोई जाता है सिर्फ एक इंटरव्यू देता है या 2 इंटरव्यू देता है और सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आज तक उसको जरूरत नहीं पड़ती इंटरव्यू देने की, क्योंकि आप इतना एक्सटेम्पोर कर चुके होते हो, इतना दिमाग खुद से चलाने लगते हो कि आपको सामने वाला जब बोलोगे तो ऑटोमेटिकली बोलने में आ जाता है, तो उसको लगता है ये बहुत कॉन्फिडेंट है, हो जाता है सिलेक्शन। और कई बच्चे उतना भी नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करके जाते हो, यही फर्क होता है। समझ में आ गया मंत्र क्या है? दूसरा, बिना पेन पेपर के दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो जब दिमाग का इस्तेमाल करते हो तो दिमाग भी तो तेज हो गया, मेमोरी पावर भी आपकी तेज हो गई, कंसंट्रेशन पावर भी आपका तेज हो गया। माइंडफुलनेस कितना बढ़ता है इस क्लास में। आप बिना अगर माइंडफुलनेस नहीं है तो आप इस क्लास में रह ही नहीं सकते। तो इट्स 1 hour इज एज गुड एज लाइक 1 hour मेडिटेशन या ध्यान। तो जब आप ध्यान करते हो तो ऑब्वियसली उसका फायदा तो मिलेगा आपको, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हैप्पीनेस होगा, कुछ करने की इच्छा जगती है। जैसे लगता है ना बीमारी के बाद भूख लगने लगती है तो लोग बड़े खुश होते हैं, अब थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है, तो उसी तरह से आपको कुछ करने की इच्छा अब लगती होगी कि कुछ ये कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ पाने की, कुछ बनने की इच्छा बलवती होती है। अभी और होगी, वो अच्छी स्थिति आएगी।